अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादुल्लाह वाला है और आज हम एक और स्टार्टअप इन कराची के पॉडकास्ट में हैं और आज हमें ज्वाइन किया है दबीर हेमानी साहब ने, हु इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैड अ वेरी नाइस कन्वर्सेशन ऑन मैनी थिंग्स. ये कन्वर्सेशन एक्चुअली मज़ा आ रहा है हम, क्योंकि ये इंट्रो अभी बिल्कुल हम वीडियो के बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो दबीर भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. मुझे पूछना है कि आप करते क्या हैं और आप कहाँ पे, क्या शुरू कैसे हुआ ये सब? Right. So basically, I'm an architect by education. I graduated in our Bachelor's of Architecture in the Valley School of Art and Architecture se. And a year later, I co-founded Open Door Design Studio, which is a design and interior design and architecture firm. We also do some product designs alongside. And that has been going on for around 10 years. And in the middle, I was very fortunate that I got connected via my work to some other people, and in around 3 years back, I also started as an assistant to my wife in her startup. So that's a gifting startup that she runs with a good friend of mine. And awesome. Uske baad takriban last year, I was fortunate enough again to work on plastic recycling, which is also becoming more of my deeper passion project. तो उसमें my client turned friend turned business partner now Ali Naki के साथ. So yeah, that's something that plastic recycling के ऊपर काम कर रहे हैं. Yeah, so Open Door Design Studio हमने शुरू किया और 10 साल से हमारी architecture practice है. We do a lot of projects all over Karachi, and all over Pakistan actually. And during that, I also got an opportunity to work as a T-boy with my wife. With your wife? Yeah. So basically, it's her startup, and I'm the T-boy in there, which means that I have to do... Which is the plastic one? No. This is the footprints, gift footprints. So it's a gifting platform. So that happened 2 years back, and I was just helping her out. From architect to T-boy, the journey. But basically, her idea was really simple and really cool, that she wanted to spread joy to people's lives. And we had a few... she had some ideas, and I just helped her to take it to the next level. Then फिर उसके बाद यूसी के अंदर, ओपन डोर के अंदर ही वो हमारे पास मेरी कोलीग हैं. शी इज़ ऑल्सो माई पार्टनर्स वाइफ एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट आर्किटेक्ट, शहरबानो. So she came in from outside Pakistan. She got married to Murza and she was living abroad all her life. And she made a comment. She was like कि यार बाकी दुनिया में जाते हो तो हर शहर में एक आइडेंटिटी होती है, और कराची में कोई आइडेंटिटी का पता नहीं, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल तो यहाँ पर सिर्फ कचरा है, क्योंकि कचरा पड़ा रहता है. And that was something that we realized. So then she started a workshop as part of Open Door Design Studio, and that's Open Door Design Studio workshop. And what is Open Door Design Studio? So Open Door Design Studio is an architecture and interior design firm. So what we do is we try to help. You're the owner, you're the founder. So I'm a co-founder. Okay. I have 2 other co-founders with me, Murtaza Nuruddin and Dania Farooq. We all graduated together from Indus. Okay. चले वेगली पता चल गया कि आप क्या क्या करते हैं. आप बताएं आप अपनी जर्नी कीजिए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पे पढ़ा, कहाँ से ग्रेजुएट किया, ये वाली बात नहीं हुई अभी तक. राइट. सो काफ़ी बोरिंग है. बॉर्न इन कराची, lived all my life in Karachi, and I studied from city school. सारे शहर में हर ब्रांच लगभग मैंने विजिट कर ली थी. बिकॉज वो होता है कि दो क्लासेस की ब्रांचेस होती है, कि वो नर्सरी ब्रांच अलग होती है, उसके बाद फिर आपको प्रेप ब्रांच जाना पड़ता है. तो ये जो सिटी स्कूल है ये सब so नहीं, फिर इवेंचुअली आई केम बैक टू ए लेवल्स मैंने यहाँ से कंप्लीट किया. सो बट सो दैट हैपेंड, एंड आई थिंक व्हाट वाज ग्रेट अबाउट दैट वाज दैट at that point, I don't know about now, there was a very diverse crowd that we had over there. So there was industrialist ka beta versus a school teacher ka beta versus someone of a middle class family versus, so you had a taste of everything, and then you got much exposure. There was not a single class or single socio-economic strata that you were exposed to. So I graduated from there. Then I was fortunate that Indus Valley में मेरा admission हो गया, तो वहाँ पर गया. struggled the first year quite a bit. मुश्किल होता है क्या उसमें जाना? So yes, it for a lot of people it is very difficult, because I think now तो वो भी बहुत ज़्यादा हो गया competition. Unfortunately art schools बहुत कम है हमारे मुल्क में, और Indus Valley is one of the best ones in Pakistan, definitely one of the top ones in Karachi. तो
उसमें फिर क्या हुआ कि वहाँ पर पहला साल तो समझ ही नहीं आया ना क्या हुआ कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स में नहीं था. बट आई वॉज लाइक कि यार अच्छा ठीक है, फिगर आउट करते हैं. सो वन आफ्टर फर्स्ट ईयर आई गॉट टू नो कि दिस इज हाउ this is the way up. So then second year onwards I started enjoying the whole thing, and yeah, that was where I completed my studies. Awesome. And when did you start working? तो आपने जो बताया कि जो एक IVS में आपने फिटनेस वैली में आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी थी, उसका काम था कि it was teaching soft skills. Yeah, so basically when the first part of when did I start working? So my father is a contractor. And we have a construction company जो family business है. Right now my brother runs it with him. And मैं क्योंकि आर्किटेक्ट जब पढ़ रहा था तो एक होता है ना कि यार आर्किटेक्ट आता है साइड पे और बाकी लोग. सो मुझे वो कभी वो चीज़ आई नहीं ना. सो मैं उस वक्त जब पढ़ रहा था तो शाम को डैड मुझे बोलते थे साइड पे चक्कर लगाओ, वो सुपरवाइजर के अंडर बिठा देते हैं. सो एक कॉम्प्लेक्स होता है ना कि यार यू आर सुपीरियर और आपने पढ़ा हुआ है वो, और वो झिझक के हाथ गंदे नहीं करने ये सब नहीं करने, वो काफ़ी जल्दी निकल गई. So there was a lot of learning, and also I got to know very closely that what are the realities of on-site kind of thing, whereas a lot of people are disconnected. So of course उस वक्त समझ इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि आप उस वक्त एज ए स्टूडेंट थे, लेकिन वो चीज़ मुझे समझ आई. तो that was a good early experience. For some reason I always had that entrepreneurial thing. I'll tell you a good, very interesting story. मैं A levels में था, तो A levels में मैंने जो बोला यार कि कुछ करना है मुल्क के लिए, लोगों के लिए. तो मैंने 2 जगह अप्लाई किया. मैंने एक PTI में अप्लाई किया था और एक बिकॉज आई वाज उस वक्त दिस वाज लाइक इन 2006-7 आई डोंट रिमेंबर. या सो उस वक्त ये किया था और PTI थी अपेरेंटली, ठीक है, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. और फिर इसके अलावा जिंदगी ट्रस्ट में अप्लाई किया था. वो क्या है? जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन. और फिर मैं क्या करता था कि मैं यहाँ A levels यहाँ पर सिटी स्कूल में पढ़ा था A levels में, और वहाँ पर से फिर मैं, और उनका ऑफिस था अनम ब्लेसिंग्स करके यहाँ पर शार फैसल पे बलोच कॉइन के ब्रिज के नीचे. कभी कभी मैं पैदल भी जाता था वहाँ पर. सो आई वाज लाइक आई वांट टू बी पार्ट ऑफ समथिंग बिगर. सो PTI से जवाब नहीं आया, उनसे जवाब आ गया. एंड आई हैड दिस एट दैट टाइम समरा मुस्लिम was leading she's leading Walnut right now, the PR company, and Samra Muslim was leading Zindagi Trust mein with Shahzad Roy, and she was the first mentor I had. So I worked with her, and I was a kid at that point, and but she involved me in things, and at that we got to also invite Bryan Adams over. So I remember 29th को उसका कॉन्सर्ट था, 28th मेरी बर्थडे थी, ऐसा कुछ था. तो रात को हमने केक काटा था सबके साथ, एंड शहजाद वाज देयर. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. सो वो अगेन वो चीज़ सारी कंटिन्यू थी. और जब तक वो समरा वहाँ थी और उनका ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा एक आगे पीछे चीज़ें नहीं हुई मैनेजमेंट में, तो मैं वहाँ पर था. समरा के साथ आई थिंक मेरे भी कुछ प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई थी, तो वो था. और रानुमा वॉज समथिंग दैट 2010 में, अगर आपको याद है, बहुत बुरा हाल था कराची में. हर जगह धमाके हो रहे थे. हमारा स्कूल बंद करा दिया था. मैं 8 साल का था, मगर हाँ इतना पता है क्योंकि हमें स्कूल से हमें गाड़ी आती थी स्कूल के दरमियान में कि जी आज छुट्टी हो गई जल्दी. हाँ. चलो जल्दी छुट्टी हो गई. बिल्कुल एग्जैक्टली चलता था कि हाँ. अच्छा, इंडस में ना एक अलग दुनिया है, क्योंकि आपको अब बाहर निकल के कहता हूँ ना कि एक आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हो चीज़ों के अंदर. आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार मैं पढ़ रहा हूँ आर्किटेक्चर, मैं सब कर रहा हूँ, दुनिया जल रही है तो क्या होगा. और उस वक्त एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुझे एग्जैक्टली इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में. सो किसी एक यूनिवर्सिटी में हुआ था. और then I was so frustrated. So what I did was I was like, I talked to a few friends, and I was like कि कुछ करना चाहिए. तो हमने कहा अच्छा ठीक, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम नाम तो याद रखें. All of a sudden people forget that these are people, these are numbers. आज 40 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 4 लोग मर गए. So like जिस दिन 4 लोग होते तो अच्छा ठीक है आज कुछ नहीं हुआ. But imagine the numbers, because every person has a family behind it. So हमने कहा कि हमने एक विजिल रखी, भाई आए लोग, उन्होंने बस लोगों के नाम देख निकाले सब चीज़ें. So that was how it started, and then we got more support, and then we launched the whole thing. So the idea was, again, like I said, that it was an umbrella organization. And उस umbrella organization के अंदर you can really plug in other projects. Like if I remember there's one person, she wanted to do a schooling project. So एक domestic staff के बंदे के लिए जिसकी ज़िंदगी पूरी मुनस्सिर है कि यार मैंने इन स्टूडेंट्स की ज़िंदगी आसान बनानी है, वो कभी सोच नहीं सकती कि उसका बच्चा जो गलत है बाय द वे, वो इस बच्चे के साथ इक्वल है.
So now saying things is completely easy, like, you know, कि ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसी चीज़, लेकिन actually how can we make that person feel better? So what we decided, and this was again my team, I remember Amafa is one person, she was leading this, Fahad is other, I'm sorry, I'm leaving out a lot of other great people who helped this in this, but what really they did that, they Saturday को ना उनको स्कूल में लेके आते थे उनके बच्चों को सुबह उनके साथ, उसके बाद उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाते थे भाई। उसके हमने यूनिसेफ को इन्वॉल्व किया, वर्ल्ड क्या बोलते हैं टूथपेस्ट डे है कुछ, वो किया हमने, हैंड वॉशिंग डे किया, उनको सिखाया कि गुटखा नहीं खाओ। एंड उनके प्रॉब्लम बहुत अजीब थे। एक दिन बच्चा आया, वो बहुत डाउन तो वाला, किसी स्टूडेंट ने बोला क्या बोला, मेरा भाई मर गया। बोला क्यों मर गया, बोला क्योंकि उसको गोली मार दी। एंड पीपल डिडंट नो हाउ टू react to that. So that was then again I remember Sarah Mohammad Ali was that person that she was again leading at one point. She said नहीं इन लड़कियों को, इन स्टूडेंट्स के साथ बिठाने के लिए ट्रेन होना चाहिए. So we went for teacher training. So all of those things kept on happening. So वो एक था, फिर बाकी रमज़ान support project and a lot of these things kept on happening. And the biggest thing that happened at that point was 2010 में या 2012 I remember there was a flood that came. And I feel that in this की तारीख में I was so fortunate that I was part of that thing at that time. इतने लोगों ने contribute किया. पूरा जो courtyard है, I don't know if you've been there, तो there's a courtyard in the middle of नसर मंची के दरमियान. पूरी एक चेन लगी थी एक जगह पे, दाल, आटा, students, teachers, founders, फैकल्टी, यू नेम इट, एवरीवन वाज, ऐसा लग रहा था कंटेनर भर रहे थे. और अचानक से रात के 3 बजे कंटेनर भर रहे हैं, 4 बाइकें रुकी, लड़के आए, उन्होंने कहा क्या है, हमने कहा कंटेनर है. हमारे पास इंडिया में लड़कियां कम है, लड़कियां ज़्यादा है, लड़के कम है, तो कंटेनर में लोग चाहिए थे सामान भरने के लिए. आ गए, कुछ सलाम जो कुछ भी नहीं. दैट वाज एन इंस्पिरेशन टू मी दैट पाकिस्तान के अंदर अच्छाई करने जाओ तो कोई उसकी लिमिट नहीं है, बट कैन यू गेट द फोर्सेस टुगेदर. सो that was something that was really inspiring. Even Gambi, Noori का drummer है, he called me up one day. He was like concert कराते हैं, पैसे फ्लड के लिए करते हैं. And I was like, then he got Ali Azmat, then he got Faisal Beg and couple of more people, and they performed for free. So that was a great journey. It's phenomenal, amazing. So how did this architectural firm come into being? So that's also again very interesting. But we have to quickly get to the plastic thing as well now. Yeah. Right. I just keep sometimes मैं बह जाता हूँ. कोई मसला है, मैं आपको टोक दूंगा. जबरदस्त. अच्छा यार, so basically मैंने ग्रेजुएट होने का 1 साल मैंने अपने मेरे जो टीचर थे, he hired us and he hired all 3 students जो उनके थे, मैं अरमुकान और अफान. So basically तो हमें उन्होंने हायर किया, और हमें उस वक्त जब उनके साथ काम कर रहे थे, हमें सिंगापुर से एक जॉब ऑफर आई, और फिर फॉर सम रीज़न द फर्स्ट टाइम इन आई थिंक उनकी सिंगापुर की हिस्ट्री कोई उनके प्रोटेस्ट हुआ और वो कैंसिल हो गई. सो हमारा वीज़ा नहीं मिला टेक्निकली. अच्छा. हाँ, तो सो एनीवे, बट दैट वाज लाइक, डू यू नो, डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन वे. सो देन I worked over there, and but I felt that there was something I needed to explore on my own. So I just spoke to my very good friend, and वो मेरा पार्टनर भी मुर्तज़ा. हम लोग वॉक कर रहे थे कराची जिमखाना में ऐसी, तो मैंने कहा यार कुछ करते हैं साथ में. इज़ लाइक कि ठीक है, मेरे पास एक बंदा है, वो कह रहा है उसको हेल्प चाहिए किसी प्रोजेक्ट में. मैंने कहा आई हैव अ फ्रेंड्स ब्रदर, ही ऑल्सो वॉज थिंकिंग ऑफ आस्किंग, एंड दैट्स हाउ ही सेड ओके करते हैं. उसको कोई नाम कुछ भी नहीं था. सो वी स्टार्टेड डूइंग इट and we got like a good kind of response, and then we were like okay, now we need to consolidate, and that's how Open Door Design and Dania joined us, and that's how Open Door Design Studio came. Awesome. And how long have you guys been doing this? So we started in around 2013-14, so it's almost been a decade. Wow, half my life. You just make me sound like a dinosaur again. To introduce us with Conceptloop, the thing you've actually been doing now, and जिसकी वजह से आज हमने आपको बुलाया, तो उसके बारे में बताइएगा कि what exactly it is, and then we're gonna have a very nice conversation on that part. So Conceptloop came into like basically यार हमने ये मैंने आपको बताया जब शेरबानो ने वो शुरू किया वर्कशॉप, तो वर्कशॉप का आइडिया ये था, शी वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मटेरियल्स, शी एक्सपेरिमेंटिंग विद वेस्ट वुड. हमारी प्रोजेक्ट की साइटों से आ जाता था, एक्सपेरिमेंटिंग विद वेस्ट पेपर बिकॉज वी आर बेस्ड इन स्कूल, तो स्कूल में बहुत पेपर होता है, वो वेस्ट होता है, एंड लॉट ऑफ अदर मटेरियल्स.
And but for some reason I forgot to tell you in the start of the Ranuma वाले thing, हमने एक प्लास्टिक हमने रिसाइकलिंग सिस्टम भी किया था, बहुत बेसिक वाला इंडस के अंदर ही एक बड़ा सा बोरा. बेसिकली इंडस में रात को ना लोग रात को रुकते थे, हम लोग काम करने के लिए. सो व्हाट यूज्ड टू हैपन कि किसी का हाथ कट गया था, कटर वगैरह से काम करते थे, तो कुछ होता नहीं था फर्स्ट एड वगैरह उस टाइम पे. अब तो आई एम श्योर थिंग्स हैव चेंज्ड. तो हमने कहा यार I'm sure because I know people like थोड़ी और चीज़ें और सिस्टमाइज हुई, evolution. But anyway, so हमने कहा यार अब ये तो कोई सीन नहीं है, तो इतने सारे कचरा जा रहा होता था. एक बड़ा वो जो बोरा नहीं होता जो अफगानियों के पास होता है, वो हमने रख दिया 1-2 फ्लोर्स पे. सही है. The idea was that अच्छा रात को बंद होता था by the way, वो जो फर्स्ट एड बॉक्स स्कूल का होता था, ठीक है, because it was people used to take and like abuse it. हमने कहा हम 3 फर्स्ट एड बॉक्स लगाएंगे तीनों फ्लोर पे और वो खुले होंगे. बस वो हमने स्क्रू कर दिया दीवार को. द आइडिया वॉज दैट कचरा जमा होता था और एक डोमेस्टिक स्टाफ वाला बंदा वो कचरे को बेचता था, 10-20% उसका होता था, बाकी उसकी ये होती जिम्मेदारी वो पैसे ले और जो चीज़ कम है उसमें डाल दे. ओह ऑसम. सो अगेन सर्कुलर वाली चीज़ जो है. बिल्कुल. और मेरे पास लोग आए कहते थे सर उसने ना पट्टी निकाली है. तो मैंने कहा निकालने तो आपके लिए बोला, लेकिन ये तो स्टूडेंट्स के लिए. मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं. सो द पॉइंट वाज दैट पीपल स्टार्टेड टेक ओनरशिप ऑफ इट एंड दैट वाज वेरी अर्ली. मुझे समझ आया यार कि लोग ओनरशिप लेते हैं, आप उनको रीजंस दो. बिल्कुल है. तो वो बहुत सक्सेसफुल था. सो एनीवे, सो वो सब चीज़ें दिमाग में थी. बाकी मैं वैसे भी अगेन पीपल आर क्लोज टू मी नो दैट ऑल ऑफ दैट टाइम आई एम जस्ट थिंकिंग वी नीड अ बिगर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. मैं बोलता रहता हूँ एंड but I was looking for something and I started doing some experiments. And you would believe me not, so there's a community precious plastics. Precious plastics, yes. हाँ ठीक है. बहुत बड़ा है वो. बहुत बड़ा है. तो मैंने उसके कुछ चीज़ें देखी, तो मैंने कहा चाहिए कि यार देख तो लिया, अब एक्सपेरिमेंट करते हैं. अब एक्सपेरिमेंट कैसे करें? तो एक दिन सुबह को मेरे घर पे वॉफल मेकर पड़ा था, तो मैं वॉफल मेकर लेके आ गया. मेरी वाइफ ढूंढती रही उस दिन और शी वाज नॉट टू इम्प्रेस्ड दैट आई जस्ट टुक एंड आई पुट सम सबवे के. अच्छा वॉफल मेकर क्यों लिया? क्योंकि उसकी टेम्परेचर कम होता है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर. आई जस्ट फील बैड फॉर आपने उनके बेल्जियन वॉफल्स खराब कर दिए. बट आई एम श्योर दैट आई मेड समथिंग गुड आउट ऑफ इट. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज, उससे हमने शुरू किया और उससे हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किए. और जब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, सो माय को फाउंडर राइट नाउ अली नकी, ही इज समवन दैट सो ही इज समवन दैट ही वाज माय क्लाइंट. सो मेरा जो मैंने उसके साथ ये शेयर किया, सो इज़ लाइक ओके यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर दिस मोर एंड वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस. एंड देन करण दास का जो है ना एक कंपटीशन आया, उसमें ही जस्ट सेंड मी एंड स्क्रीनशॉट कि वी शुड डू दिस. एंड आई वाज लाइक नो व्हाई डोंट यू डू इट फॉर सम अदर स्टार्टअप ऑफ योर्स. बट ही वाज लाइक वी शुड डू इट. So we applied for Karan Das, and at that time I applied as part of Open Door. He took one of his companies and he applied as a joint consortium. We were like, okay, the idea is we want to learn how to go into these things. As it happened, into what things? Into like recycling and stuff. नहीं, basically Karan Das जो है वो आपको financing दे देता है to scale these ideas. So basically वो उसने कहा यार कि अगर हमें इस राउट जाने हैं, हमें बिगर सोल्यूशन पे अगर फोकस करना है, तो हमें बिगर चीज़ लाइक हमें एक सिस्टम करना है, सेटअप करना है जिसके हमें फाइनेंसिंग और हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए. तो उसके लिए हमें ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस के पास जाना पड़ेगा. उस वक्त हम बोला कि ठीक है यार कर लेते हैं, देयर इज नथिंग टू लूज, कौन सा कोई मिल जाएगा ना. अल्हम्दुलिल्लाह एज इट हैपेंड वी गॉट थ्रू एंड वी वर वन ऑफ द 3 finalists in the thing. So जब वो बन गया, then we were like, okay, now we have it. Just push the timeline forward, and then we established this company sometime in December 2021. So that's how. What is the company? Conceptloop. करता क्या है यार? बेसिकली हम करते ये हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो आप फेंकते हो ना कचरे, जो पूरी दुनिया और वो प्लास्टिक. मुझे आपकी 30 सेकंड पिच चाहिए, एलिवेटर पिच चाहिए. एलिवेटर पिच कभी दी नहीं है, लेकिन चले बेसिकली कैमरे में देखते हुए. हाँ, सो बेसिकली कॉन्सेप्ट लूप जो है वो ओशन से और लैंडफिल से प्लास्टिक रिसाइकिल करके और रीडायरेक्ट करके और वो आपको लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग मटेरियल्स बनाती है. वाज इट गुड इनफ? एग्जांपल प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली व्हाट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी हैव राइट नाउ, हमारे प्लास्टिक पेवर्स हैं. वी हैव ऑल्सो डन, जैसे आपने कोरियान या फॉर्मिका की सर्विसेज देखी है, हमने वो किया है. उसके अलावा वी आर ऑल्सो हैप्पी टू शेयर दैट वी माइट बी वन ऑफ द फ्यू पीपल इन पाकिस्तान और मे बी द फर्स्ट दैट हमने जो हमारी पेट बॉटल होती है उससे हमने आई फ्रेम्स बनाई है. आई फ्रेम्स, सनग्लासेस. या ओह, आई वाज जस्ट इन बर्लिन. वहाँ पे कंपनी उसको गूगल ने 60,000 यूरो दिए अभी पिछले महीने. यही कर रहे हैं वो लोग, और वो
हैं अफ्रीकन लोग. But again, sorry, just came to नहीं बिल्कुल, because this is happening in Australia. It's something that's really interesting. Yeah, उसके अलावा हमने एक और चीज़ एक्सप्लोर की, हमने प्लास्टिक ज्वेलरी भी बनाई है. So that's something that also we did as a prototype. उसके अलावा हमने प्लास्टिक के कोस्टर्स और प्लेटर्स वगैरह भी वो किए हैं. So all of these things are something that we have come. So what's your mission with this? What's the sort of impact that you're aiming to achieve with Conceptloop? And how do you get there? So right now we are fairly young at this. Like if I What's count, your vision? Yeah, but I think one is that we are evolving as we grow. Our vision really is कि हम कितना ज़्यादा, दो चीज़ें basically 3 R's हैं: reuse, reduce and recycle. So हमारा focus जो अभी हम aim कर रहे हैं हमारा recycle पे और reuse पे ज़्यादा है. Reduce is something that's more a consumer based thing. What we're trying to do is that we are raising awareness, and what we're trying to do is कि यार हम क्या recycle कर सकते हैं और क्या हम reuse कर सकते हैं. So because recycle is first part of the problem, but if we can stop the trash coming into the system, that's even better. So that is the two things that we will. So reduce. Now what we want to do eventually is a very single liner thing. We want to reduce the amount of plastic waste generated and the amount of plastic waste which is headed to the dumps and the oceans. Okay. So that's what we are aiming for. He's saving the turtle people. I mean, मजे की बात बताऊँ, 2050 तक अगर इसी तरह चलते रहे ना दुनिया में, तो मछलियाँ और सी लाइफ कम होगी और प्लास्टिक ज़्यादा होगा दुनिया के उसमें. What are the numbers? What's your mission? के ज़्यादा से ज़्यादा तो सब करना चाह रहे हैं, लेकिन exactly आप क्या करना चाह रहे हैं कि जी I want to recycle at least 1,000 tons by 2040 or 2030 by making iframes or by making tough tiles or by making roof tiles. जो भी चीज़ है, या wall panels. I agree कि उसमें the horizon is the options are so many कि it's endless. आप आर्किटेक्ट हैं, आपको पता है कि जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हर रोज़ कितने नए आते रहते हैं और it's very hard to keep up. I'm not one of those, मगर I am very curious into construction, so I'm always looking at more and more videos, and it's अब तो दिमाग से ऊपर से सब कुछ जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता. मगर like in your business, what do you aim on doing? Because you said that आपने करंदाज में गए तो you wanted to see कि इस aspect पे कि हम कुछ ऐसा करें कि पैसे भी मिलें या कुछ करें. तो what's happening there? That's what I'm trying to get. Right. So basically हमारा pitch था वो जो building material lifestyle products का, उसी के ऊपर अगर मैं बताऊँ मैं आपको, lifestyle products जो है ना वो आपका ऐसा है कि जिसके अंदर आपके पास मे बी मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जो यूजेबिलिटी है उसकी स्केल है वो एक लिमिटेड है. ओके. एंड सेकेंडली वो इतना ज़्यादा ट्रैश को नहीं उठा रहा, ठीक है. बट हाउएवर व्हाट अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट डज इज दैट वो आपको अवेयरनेस देता है, वो आपको एक ओनरशिप देता है. कल मैं अगर आपको बोलूँ मैंने चश्मा पहना हुआ है, अगर ये रिसाइकल प्लास्टिक का, आप बोलोगे यार ये सस्ता होना चाहिए, बिकॉज नहीं है. सो बट बेसिकली ये अगर आपके दिमाग में ये होता है, क्योंकि हमारी जो लोकल लोग ये पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है, और राइटफुली सो, कि रिसाइकल्ड इज लो क्वालिटी. सो वो अवेयरनेस को हम लोग कर रहे थे बिल्डिंग मटेरियल जो हमारे लाइफस्टाइल. हाउ गुड इज योर क्वालिटी दो? Sorry? How good is your Again, we are not launching it because the fact is that we aren't at that quality, but with the R&D is going on. And again, the question that you had, that yes, we want to collaborate with brands who will then put in that money or that kind of systems along with us to take the product from a prototype to something which can commercially launch. But हमारा focus अभी जो है ना building materials पे, for 2 reasons. One, आप जिस कम्युनिटी में चले जाओ जहाँ पर सोशली लोग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कचरा, और वहाँ पर हाउसिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें. और जहाँ पर कम्युनिटी में जाओ जहाँ पर आप के एफ्लुएंट नेबरहुड्स हैं, कचरा नहीं होता वहाँ पर, जबकि सबसे ज़्यादा कचरा वही जनरेट करते हैं. You're thinking about which affluent community में कचरा नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ. नहीं, relatively साफ होता है. Yeah. So what happens is that we're thinking that वो एक प्रॉब्लम है जो उस कम्युनिटी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास वो चीज़ें ही नहीं है उसको सही से करने के लिए. क्या उस एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? So taking the trash and making affordable, sustainable building materials. So like I said in the beginning, हम लोग की जो बात हो रही थी कि एक शैम्पू की बोतल जो है वो इस्तेमाल होती है, वो ख़त्म हो जाए 3 महीने के अंदर. उसको अगर आप एज अ काउंटर टॉप कर देते हो
Like when was the last time did you change your countertop in your house without moving the house or renovating completely? So that's at least 20-30 years done. Offices हैं उसमें table tops होते हैं. People don't change table tops every day. So it has a much more longer kind of the life cycle of this. Again, थोड़े से अगर मैं numbers मांगूँ आपसे वापसी कि कोई तो numbers provide करें कि जी this is something that we have already कि जी अच्छा आपने का lifestyle product wouldn't be offsetting, wouldn't be recycling at least 10,000 टन तो recycle ना करे, लेकिन it will create this much awareness या इतनी eyeballs वो ले आएगा इस project पे. या कोई construction material for example बना रहे हैं तो आप इतने टन कोई तो aim हो ना what you actually aiming towards. So for example investor is watching this video right now, वो क्या मांगेगा कि जी आप शार्क टैंक में अभी खड़े हैं, आप क्या मांगेंगे उससे? So basically हमारा बहुत सिंपल एक वो है, हमने उसको जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं हम 10,000 टन सोच रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम उसको एम कर लेंगे. और सॉरी by mainly by building materials. So like I said हमारा जो भी focus building materials पे ही है. Perfect. लेकिन again if there is a person, there is a company that comes and wants to invest into a solution of lifestyle, will want to work towards that. बिल्कुल. So but हमारा focus जो हमारा lifestyle के बजाय building material पे, we already are talking by the virtue of being an architect. I also presented this at the IPEX building construction की एक पूरी exhibition होती है कराची की सबसे बड़ी. बिल्कुल जी. तो उसमें मैं speaker था. And I'm very glad to say that when I shared this idea, I got overwhelming kind of support from much senior community, senior teachers, mentors, and there were people from the couple of people I would like to say कि एक तो वजात अली करके हैं जिन्होंने खपलू में आगा खान फाउंडेशन के साथ काम किया है, वो मेरे पास पर्सनली आए, उन्होंने कहा कि you have to take this and you have to scale this and you let me know what to do. And there are many more people and I got a call, like a couple of orders and we were like, we are at prototype, we're just setting up our machinery to, but they're like आप जब भी करोगे हम ले लेंगे. तो ये ऑर्डर जल्दी से पकड़े आप. जी. तो वो सारी चीज़ें at this point may also gives us this kind of एक तरह के validation देती है कि people will go towards it. And of course 10 years into architecture community and architecture school before that, also that gives me some kind of an insight of what kind of things that people want today. And honestly Pakistan, unfortunately, sustainability, people want to have these solutions but they don't know where to go. And this is not only building construction lifestyle, this is through and through. आपको चाहिए, for example straws आपको नहीं चाहिए, but can you give someone an alternative which will not break the bank? अगर आप मुझे बोले स्टील स्ट्रॉ, वो 200 रुपये का अगर स्ट्रॉ कोई आ रहा है या 900 रुपये का आ रहा है, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट वर्सेस समथिंग विच इज 50 पैसे की. सो इफ वी कैन मेक द इकोनॉमिक्स काइंड ऑफ क्लोज बाय इवन, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर टेकिंग दिस सीरियसली. सो इसका जवाब मैं आपको 2 पार्ट्स में देता हूँ. इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट ये है कि नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान की जो मार्केट है वो कम्प्लीटली प्राइस सेंसिटिव है, और हम जो ये एम कर रहे हैं हम अफोर्डेबल बिल्डिंग मटेरियल एम कर रहे हैं. वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ कि यार ये हाई एंड बिल्डिंग मटेरियल, विच मीन्स दैट प्राइसिंग इज वन ऑफ द मेन थिंग. आप किसी को बोलोगे घर बनाना है, वो सारी ज़िंदगी में लोगों से उधार लेके पैसे लेके घर बनाता है, जो समझो आप 80 गज का घर बनाता है, वो उसके प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ बहुत कम है कि सस्टेनेबल है या नहीं है. ठीक है, दैट्स द रियलिटी व्हाट इट इज़. सो if we want to go to that market and target that, we have to be price sensitive about it. And how we work around that is something that will come as a business acumen जो भी होगा. At this point that we are on an R&D basis and हम scale से तकरीबन जो हम अपनी pilot से तकरीबन समझे कोई एक हफ्ते पे 1 महीना पहले. At this point we are not thinking of the unit economics per se, right? But we know that if we can achieve, like अगर मैं आपको बोलूँ ये 50 पैसे का स्ट्रॉ है और 5 रुपये का स्ट्रॉ है, आप वो बोलोगे हाँ ठीक है दुनिया बचा रहा हूँ, मैं 4 रुपये खर्च कर लेता हूँ. Now 50 पैसे और 900 is a big gulf. So what we want to do is that even if the brick is like for example एक 14 रुपये का brick है और एक 15 रुपये का है या 16 रुपये का है, people will still think of it. But I tell you that 15 रुपये के brick का जब 35 रुपये का करो या 50 रुपये करो, people will not go for it. You will of course get those corporates, आपको एक CSR मिल जाएगा, लेकिन those are those stunts. And I feel that in order to solve the bigger problem, we have to make something which is affordable. And जो ये आप प्लास्टिक सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, हमारे ऑलरेडी जो कबाड़ी सिस्टम है इट्स ग्रेट. वी डोंट नीड अ सॉर्टिंग सिस्टम अनदर. इफ वी कैन ट्रेन देम, वी कैन पार्टनर विद देम. होता क्या है, वो 1.5 इंच की मस्जिद वाली चीज़ होती है ना, सब कुछ मैं खुद करूँगा. लेकिन हमारा इको सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है. अब उस इको सिस्टम से फ़ायदा उठाना है या हमें कहना है नहीं यार ये दुनिया में तो कहीं और यूँ हो रहा है. सो इट्स अबाउट लोकलाइजिंग द प्रॉब्लम. सो हमारा जो अभी एम ये है, हम कचरा खरीद रहे हैं बिकॉज वी वर लाइक ओके एट दिस पॉइंट यू हैव एन इको सिस्टम. नाउ इफ यू वांट टू make it more efficient, we'll partner with that guy and we tell him that your business will also get better. So that is
the idea that we're working with. And we had this conversation with Habib bhai as well, and it was the same thing कि हम लोग हर चीज़ को बाहर के एस्पेक्ट से सोचते हैं, हम लोग लोकलाइज करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते. And until we localize some things similar to what Airlift did, some things have to be localized, and if we don't, it's destined to fail. क्योंकि ऑलरेडी अगेन अफगानियों का इतना बड़ा क्राउड, अफगानियों की इतनी बड़ी गैंग, इतना बड़ा लोग, इतने सारे लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में. और अब जैसे अभी पिछली थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि पूरी मतलब पूरे हाउसिंग कॉलोनी जितने, तो उनके सिर्फ कलेक्शन सेंटर्स हैं, गोदाम है. आप शेरशाह में चले जाएं, आप घूम जाते हैं. बट आई फील दैट अगेन मैं अपने आप को अक्सर अनरीजनेबल ऑप्टिमिस्ट कहता हूँ, ठीक है. आई एम ग्लैड दैट अ लॉट ऑफ पार्टनर्स दैट आई वर्क विद, they are more reasonable than I am in terms of optimism, so we kind of share that balance. But I feel that हर चीज़ में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, आपने वो ढूंढ के निकालनी होती है. अब हमारे पास एक पूरा सिस्टम, सॉर्टिंग सिस्टम है, तो हमारे ऑफकोर्स वो मशीन नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं, लेकिन जब आप कोई चीज़ शुरू करेंगे, उनको वैल्यू दिखेगी. आई फील एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय वैल्यू, तो वो खुद ही आपके पास आएंगे. ऐसे ही. सो कैन वी क्रिएट दैट वैल्यू, कैन वी क्रिएट दैट नैरेटिव, कैन वी क्रिएट दैट स्टोरी? That I feel is the most difficult part. Getting all these cogs to work together when everything will be, उसके कहते हैं ना, उसके जब फ़ायदा दिखेगा तो लोग खुद ही खिंचे आएंगे. So that is where the brilliance will probably hopefully come in. Definitely. Awesome. Perfect. बहुत शुक्रिया एक तो दबीर भाई आने के लिए. Amazing conversation. So many things I actually do want to talk about, मगर लंबी होती रहेगी ये वीडियो और कहीं ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि again, he's an architect and I'm very into construction and designing. I mean, not as much as him, of course. मगर it's just so intriguing कि हमारे locally हम किस चीज़ों को किस तरह cater कर सकते हैं, क्या problem solve हो रहे हैं. And until we really talk to people who are in the industry, we shouldn't assume. Until we have the second point of view. जैसे अगर हम लोग सोचते हैं, जैसे प्लास्टिक पे काम कर रहे थे, इनको पता ही नहीं था कि मैंने भी प्रोटोटाइप बनाया हुआ था. तो until we actually put our word out there, मैंने शायद मार्केटिंग सही से नहीं करी थी, उनको पता ही नहीं चला. अगर अच्छी तरह करी होती, अगर सही से लोगों को बताता, तो इनको भी पता होता. तो that's the same with everything. Sir, I'll just say one thing. I feel एक जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं ना, और जो आपने बात बोली इसी के, we are reaching out. We are reaching out and telling that this is what we are doing. And I kid you not, the amount of support that people have given. And I'm not talking about financial, I'm not talking about the fact that people are coming forward together. यार मैं इसको जानता हूँ, आप इससे बात करो, मैं इसको करता हूँ. And I feel that ये चीज़ मुझे पाकिस्तान, like I'm not someone who's very into like the startup scene and everything, but I feel that whatever small थोड़ा बहुत काम मैं कर रहा हूँ, people in the circles that we are in have been super helpful. And so it's about how good or how well can you tell your story and what kind of credibility you come with. So I think that credibility does not mean that आपकी कंपनी की credibility है, आपकी ये credibility है. बिल्कुल है. And yeah, that's completely correct. कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, करें, शुरू करें और लोगों को बताना शुरू करें. छुपाएंगे जितना, उतना देर से बिकेगा, उतना नुकसान होगा. दुनिया में आज ऐसे टाइम पे हम रहते हैं साथ कि दुनिया में आपको बेसिकली अगर आप दोस्त बनाने, सबरीन बनानी ना, वो भी कहीं यूट्यूब पे या कहीं किसी गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा आपको. So the fact is, it's not about that idea. It is not about the idea. Idea is 1%. It's about, are you willing to put in the hours? Are you willing to go that all the way? And are you passionate about it? If passionate नहीं होता तो यार वो फिर पेट्रोल खत्म हो जाता है. Awesome. Thank you so much for coming, Dabeer bhai. It was a pleasure having you, and really looking forward to your project to be actually a reality. And I want to see कि किस तरह चलता है. I want to help out as much as I can. Yeah, I'm already excited and thinking about 10 ways we can work together. Perfect, definitely. बस इंशाल्लाह देखते हैं इसको. आगे देख होता है क्या. चलो, okay. Thank you so much. Thank you.